Hello, beautiful people. Welcome to Codeyatra. In this video, we will learn about conditional statements in Python. So, there are total four types or total four forms of conditional statement. Number one, if statement, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. Second, if elif statement, and third, if else, if elif else statement, and the fourth stand for nested if statements. So, let's start with if statement. If statement is used when a condition gets true. When a condition gets true, only then information written in if statement will executed. For example, we take a variable called age and हमने इसमें इनपुट करवाई कोई वैल्यू. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो यू विल गेट कनेक्टेड दैट हाउ वी टेक दिस इनपुट वैल्यूज. तो व्हेन यहाँ पे जब मैंने लिखा एंटर योर एज, यहाँ पे इनपुट करानी है एक वैल्यू. उसके बाद हमें लिखनी है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18. इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, only then only then print you are eligible to vote. You are eligible to vote. ठीक है. तो इफ स्टेटमेंट तभी ट्रू होगी अगर एज की वैल्यू 18 या 18 से ज्यादा होगी, अदरवाइज इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड. So let's run this code and we will see what the result is. It is asking for age and we will write 18. And you can see you are eligible to vote is showing here. What if I will write my age as 15, let's say, then it will not give any output. Then it will not give any output. So thank you for watching.